सेकंड थर्ड दोनों मिला के जो लोग हैं अवेलेबल, सेकंड में अभी नाम लिया हमने, लगता है डॉक्टर ध्रुव सेन सिंह, डॉक्टर दीप नारायण, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर अन्विता वर्मा, डॉक्टर राम प्रताप यादव, डॉक्टर रमेश कुमार. Then we will have more chair if other people are there. We'll have more chair. Dr. Richa Mishra, there is one chair vacant here, this side. अभी हम लोग सेकेंड सेशन स्टार्ट करेंगे. बोल दीजिए जो आएंगे फिर उनको दूसरे वाले में रख लेंगे, और क्या इसके बाद वाले में. हाँ जी जी जी, क्योंकि दो को हम क्लब कर देते हैं इसमें, 2 और 3 को. नहीं नहीं कर तो देंगे, लेकिन जैसे आ जाए लोग तो और चेयर मंगा लें. प्लीज़ लेट्स हैव 2 चेयर, 2 मोर चेयर्स प्लीज़. आ जाएं, आइए डॉक्टर साहब. जी जी जी, आई गॉट इट. उन्होंने इतना अच्छा वो सुनाया था. बहुत सुंदर. आप बैठिए, आप बैठिए. आ रहा, कुर्सियाँ और आ रही हैं प्लीज़. प्लीज बैठ जाएं आप लोग. प्लीज बी सीटेड, टेक योर सीट. प्लीज टेक योर सीट एज सुन एज पॉसिबल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम. आफिया जी 2 चेयर्स और मंगा लें प्लीज.
अनविता वर्मा, फिर कविता गौतम, योगेश सर, कुमार दीपक सर, फिर उनका क्या बताया आपने, कृष्णदत्त सर, फिर उसके बाद राम सर के बाद श्वेता मैम और रजनीश सर। ठीक है सर, कुछ आपसे करवा देते हैं, कुछ नीचे के टीचर्स को बुला देंगे सर। जो जहाँ कंफर्टेबल। हाँ ठीक है सर, मैं वेलकम बैक all of you. We are starting with our panel session second. I request now Dr. Bhanu sir to please start off this session by felicitating our dignitaries on the dais. Bhanu sir, I request you to please felicitate Dr. Anvita Verma ma'am from Department of Social Work, University of Lucknow. Students, please applaud. You have your Now I request Bhanu sir to felicitate Dr. Kavita Gautam from Allahabad State University. Now I request Dr. Shilpa Shukla from Sri Ram Swaroop Memorial University to come on stage and felicitate Yogesh sir from HCL. I request Shweta ma'am to please facilitate I request Dr. Shilpa ma'am to please felicitate Kumar Deepak sir. I request Dr. Shikha Singh from Department of Social Work, University of Lucknow to felicitate Krishnadat sir from KGMU. I request Shikha ma'am to again felicitate Dr. Ram Pratap Singh sir from Sri Ram Swaroop Memorial University. I request now Shikha ma'am to please facilitate Dr. Shweta Shukla ma'am from Sri Ram Swaroop Memorial University. Now I request Dr. Pavitra Bajpai ma'am from SRMU to please felicitate Dr. Rajneesh sir, Department of Social Work, University of Lucknow. Thank you so much, teachers. बहुत बहुत धन्यवाद आफिया जी।
हम लोग अभी शुरू करेंगे जो चिंतन है वो ये है कि डेवलपिंग यूनिवर्सिटी नेटवर्क, द प्राइम मिनिस्टर्स 10-point एजेंडा ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन with a special focus on interdisciplinary research practices and lessons learned. I think this is going to be very important subject to know you all, because students are here, international students are here. Their basic purpose is to learn what new studies are going to be proposed, what new researches need to be conducted, and how to understand disaster risk. See, knowledge is power. Anybody who has got knowledge, it makes the person empowered, powerful, and communicator. Here, what is happening? We are just working on simple DRR, disaster risk reduction, disaster management. But something else is also happening. Do you know all that what exactly beyond disaster, beyond 2030, beyond 2050, what people are thinking and what is happening? In the last session, we just discussed what is disaster risk reduction. We just discussed that how lessons learned, are we learned properly? Most often we see that we don't use our knowledge, we don't capture the knowledge which is happening. And our Prime Minister has very nicely quoted that all of us, no disaster should go waste. You might be thinking, how no disaster itself is a waste thing. No disaster should go waste. Every disaster gives you learning, lessons, and that must be utilized for future. What is happening here? We had 3 phases in disaster management. Or you can say DRR, disaster risk reduction. The first was disaster management, which we were referring in 1990s. The second was disaster risk management, which we were referring in 2000, when MDG, Millennium Development Goal, was being discussed. The third thing, resilient management and development, we are discussing since 2010. So these are 3 phases which we have seen DRR, how it is working. And MDG and SDG, Millennium Development Goal, Sustainable Development Goal, keeping 2 things in pipeline. One is our Sendai framework and the other is Paris Agreement. So these 3 international documents with concept of Millennium Development and Sustainable Development Goals by 2030. This is in our focus as of now. But do we know that there are something else also? क्या आप लोगों में से कुछ लोगों ने या सभी लोगों ने एंथ्रोपोसीन का नाम सुना है क्या? Anthropocene. What is Anthropocene? Anthro is what? Anthro is human induced, human behavior. That is Anthropocene. A science, a kind of science. So disasters are hazards because of human induced initiatives which we don't see usually, which is not being discussed today. That is, for DRR what we are discussing is
what we are seeing today, how to counter it. What are the risks and how to counter the risk. But what are the planetary changes happening in the system? What are the planetary changes happening in the system? What is happening in the different layers of Earth because of our activities? We are not discussing. And because we are not discussing, we are not knowing, most of us, nothing is happening on that aspect. So, what is Anthropocene crisis? This is one word which has not been given recognition properly, but that is existing. That shows that the science of DRR, if you understand, the science of DRR discusses about Anthropocene. Because of human-induced activities, the changes happening in the planet. So when you go with the history of our planet, not just we are getting health risk, we are getting education risk, we are getting environmental risk, we are getting that risk, but the entire planet. And that is how it is otherwise known as epoch. Epoch, era. There are certain things we say, this age is from 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. But when you say an era, an epoch is a duration of hundreds of years, number of centuries. So during last 3 centuries, we are discussing about Anthropocene. And the day it was discussed first, or it was being imagined, was the day when our steam engine was brought into notice. So because of all these things, it's very important to discuss, to know when you go from here, you just try to find out what is something which is known as Anthropocene crisis. What are the hazards because of or those aspects which we are not seeing today. So what is happening? The research has to be conducted for those things also. The research has to be conducted for those things also which we are not seeing, but it's exactly happening. So there are many things today which is beyond our knowledge. Like, human body, people say that we know our hands function, we know our mind function, we know our abdomen function, intestine function, kidney function, all that, but very few things we know. Not more than 10% to 15% we know about our system. More than 80% we don't know. So similarly here also, what is happening to our planet, we don't know. We need to understand that also. Second thing, this is question to our panelists also. Do we understand that our modern management system, our modern governance, is it going to deal with the Anthropocene crisis? Or DRR, what we are practicing, we say this is DRR, disaster risk reduction. We say that climate change adaptation. So is there anything beyond climate change adaptation? Is there anything beyond disaster risk reduction which is not visible to us? So that also need to be understood. And many things are debatable because people do not know. So let's debate it here also, because this is a pre-conference to World Disaster Management Congress. So World Disaster Management Congress must discuss these things, because I am not talking something in the vague, but it is being discussed. It is otherwise also known as DRR science. What is science of DRR? So the science of DRR could be beyond which we are seeing today. So I'll just hand over it to our panelists, and I'll request Kumar Deepak Sahab to take the place of chair.
of this team and this panelist team, and say a few words to begin. Please think that only 5 minutes each will be, we can afford. Not say that you should or you must not or you don't, can be afford. So just 5 minutes, or most appropriately 4.5 minutes are there for each person. And I request Kumar Deepak Sahab to take it forward. Thank you very much, Dr. Bhanu sir. Actually, it's my pleasure to be here. Actually, I have also done MSW, Master in Social Work, from Delhi School of Social Work. And I'm sitting in Lucknow University Social Work Department. It's my pleasure and fortune that I'm here. And I'm attached with the Disaster Risk Reduction Program, or DRM program, since 2003. Yeah. And I've worked in different level, like in district level also, state level also. And again, I'm in teaching, like I'm a consultant in DDU SIRD, that is Deen Dayal Upadhyay Rajgram Vikas Sansthan in Lucknow. Rural Development Department is focal point of that. And as we are a part of international convention, like UN International Convention, Scientific Framework, we have signed the agreement. And it's our responsibility to stick with the agenda. We have accepted challenge related to DRR and again climate change. Again, there are a lot of convention on that, and both date collide with each other, and both are having something to do till 2030. I am having a very nice panel, academician, and I think all are so sound with knowledge. We are having agenda 10 agenda of PM, and I'm very much happy to tell that the contribution for making these agenda was also, the points was given by this native place of UP. Many points which has been taken point in PM 10 agenda is also evolved from our state of UP. Now, I just want to tell that all our panelists, first the 10 agenda, how we can contribute as an academician, as University of Lucknow and University of Ramswarup, which are the partner of UPSDMA. And I'm very happy that this effort has come too far. Actually, when we were the part of DRM, we tried to make some place disaster management in course curriculum of school, in CBSE, in various UP board, Bihar board, and many other board of various states. But now time has come that we should think about the climate change agenda also, because that is the bigger agenda, and if we are not well equipped, well versed in those climate change issues, now it is our responsibility to give the future generation, the world, what we are having the facility of nature. So that's now our responsibility, and I want that our panelists, now we are having a mixed panelist, and everybody is versed in various issues what we have to discuss, and our international students are also there. It is a very global phenomena which is coming on 29th, 20th, 30th, and I think in November only. 28th, 29th, 30th, and 1st. And 1st. Now it's a big responsibility which is being carried out by the strong hand of Dr. Vanu
and you have conducted the last session very well. I will congratulate you. Now I want to make other speaker to just stick on the points what Mr. Bhanu has given, and 5 minutes should be given to each and every person. Can I start with the person who is also a part of Department of Social? Thank you, sir. Can I speak this time? My name is Dr. Rajneesh Kumar Yadav. I'm working as an assistant professor in this department in 2016, and also work as a associate NCC officer in 64 Battalion NCC. तो दोनों का एक सोशल वर्क में मैं एज ए टीचर हूँ, एकेडमिशियन हुआ, दूसरा मैं एनसीसी का एक एसोसिएट ऑफिसर। तो दोनों में कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि डिजास्टर का किस तरीके से वर्क है ना, कि जो एनसीसी का पार्ट है प्रैक्टिकली वी लर्न द ऑन द फील्ड लेवल कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हम कर सकते हैं। और अगर एज ए एकेडमिशियन देखें तो एकेडमिक्स में इन सोशल वर्क इन करिकुलम द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द सोशल वर्क जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पेपर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि जिसमें कि जो न्यू रिसेंट ट्रेंड्स हैं वहाँ पे हम सोशल वर्क के साथ कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग ऐड करें। दूसरा एक इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क हम लोगों का 2006-7 से 2007 पीजी डिप्लोमा डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। और सर शायद थोड़ा सा उनको पहले वाले डिस्कशन में प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर थोड़ा सा मिस कर गए थे कि वो बंद नहीं है सर, वो कंटिन्यू है। और उसमें आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 28 to 30 सीट्स हैं और 30 सीट्स में 30+ स्टूडेंट्स रहते हैं और 30 सीट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स इन द डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड अनदर विद द सोशल ड्यूटीज एंड ह्यूमन राइट्स। तो डिजास्टर रिलीफ में तो आर्मी ऑफिसर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है तो उसका जो उसके लेवल का जो हम लोगों ने सिलेबस को प्रिपेयर किया या हमारे डिपार्टमेंट ने जो सिलेबस को प्रिपेयर किया कि वो लोग ग्राउंड लेवल पे तो चीज़ें उनको पता हैं, बट उनको कैसे हम थेरिकल बेस पे हम कैसे उनको लर्न कराएं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके या डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को लेके। तो ये दिस इज़ द आई थिंक 6th एजेंडा ऑफ द PM10 जो एजेंडा है उसका है पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज़ का रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी या नेटवर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वो आई थिंक हम लोग सोशल वर्क में उसको कवर कर रहे हैं। और जितने भी हमारे जो उसके अलावा जैसे इस बार हमारे यहाँ अमूमन ये होता था कि आर्मी ऑफिसर्स ज़्यादा लेते थे बट जो सिविलियन है उनका स्कोप कम रहता था। लेकिन राइट नाउ यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना स्टार्ट किया है पास्ट 1 या 2 ईयर्स बैक। तो वहाँ पे उनकी सैलरी भी 50,000 है। तो उनको जो बच्चों का एक जो मोटिवेशन है वो इस तरफ बढ़ रहा है। इस बार भी हम लोगों ने 30 एडमिशन्स लिए और उसमें मज़ेदार बात यह है सर कि 26 स्टूडेंट द सिविलियन, ओनली 4 इज द आर्मी ऑफिसर्स। तो ये बड़ा एक हम लोगों के लिए अच्छा था कि हम कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को एज ए एकेडमिशियन या एकेडमिक के थ्रू कैसे प्रमोट करें, कैसे उसको हम लोग आगे लेके जाएं। तो यूनिवर्सिटी का रोल जो नेटवर्किंग का है, नेटवर्किंग ऑफ द या जो कोलैबोरेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी का, तो सोशल वर्क में चूँकि हम लोग ऐड करते रहे हैं और सोशल वर्क के साथ एक तरीके से चूँकि वी आर वर्किंग ऑन द सोसाइटी में बेसिक लेवल पे हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने जाते हैं। तो वहाँ पे जो अवेयरनेस का लेवल है या जो हमारी जो थेरिकल एस्पेक्ट है हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, वो वहाँ से चीज़ें आती हैं और हम उसको लेके जाते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ पे है क्या कि हम लोगों ने एक करिकुलम जो डेवलप किया डिपार्टमेंट में, एक फील्ड वर्क प्रैक्टिकम भी उसमें रखा है। एक दिन का फील्ड वर्क है एंड उसके बाद उसके बिहाफ पे हम लोग एक डेजर्टेशन का प्रिपेयर करते हैं और एक कोई ना कोई एक
हमारी कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है या कोई डिजास्टर है ना, उससे रिलेटेड या एसओपी से रिलेटेड उसको हम लोग प्रिपेयर कराते हैं, जिससे कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें और किस तरीके से उसको सोसाइटी में ले जाके लोगों के लिए वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सोशल वर्क, या कह सकते हैं कि सोशल वर्क के साथ डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को या डिजास्टर मैनेजमेंट को हम इस तरीके से लेके आते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप द बेट. यूनिवर्सिटी में जो एक बहुत अच्छा कार्य 2007 से शुरू हुआ, जिसकी काफ़ी आवश्यकता अभी महसूस हो रही है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पे स्ट्रेस है. बट मुझको लगता है कि अब जो स्ट्रेस आ रहा है उसमें क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ भी यूनिवर्सिटी सहयोग करे. आपके 2 यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं और हमारे पास बहुत ऐसे लोग भी यहाँ जुड़े हैं, जैसे हमारे बीच पर्यावरण के भी बहुत जानकार व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, प्लस रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड भी साइंटिस्ट मौजूद हैं. तो हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच अगर रहेगा, क्योंकि जो हो रहा है उसमें और कैसे हम इजाफा करें और किस तरह से कोई क्रेडिट सिस्टम, जैसे सर ने बताया पिछले सेशन में, वी वर हैविंग नाउ चेंज from 2020, we are having a change. Like there is some credit system, just like IGNU, there are some credit system. So how we can have a credit system like a 1 month program or something, which can give 3 credit or 4 credit, and in any course, if you are in any course, you can have that specialization, and it can be counted as you have done something. Like in engineering section also, environment or climate change. Yeah. So what I feel that Lucknow University should also come with this agenda, that in graduation level also, in any course, like in geography, in environmental science, in geology, in various course, there should be some credit course, and general mass can also go for that. That should be online, postal course also, similar type of activity can help. And like institute, like we are having a disaster management center in SIRD also. We can also help. We are having infrastructure also. There are a lot of village environment around for field work or some sort of training. So we can think of many universities, colleges also associated, and they can have. Very nice. You have given a very nice idea and updated idea that Lucknow University is still having a very valuable course, and that's why we are here. We are sitting here because you are having an ace that you are doing this work since long. I think दीपक साहब बहुत अच्छा उदाहरण दिया है रजनीश जी ने टाइम मैनेजमेंट का. बस दूसरे को हम लोग थमा दें माइक. और तो now I think the second ma'am. Very good afternoon to one and all. I am Shweta Shukla. I am Assistant Professor at Sri Ram Swaroop Memorial University. As Sir has also discussed, we are here to discuss about the role of universities, curriculum in the risk management. See students, as an academician and as a student too, मेरे हिसाब से इसके पूरे मैनेजमेंट का, कंट्रोल का जो रोल जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक एजुकेशन से जाता है. एंड द रीज़न वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट दिस स्टेज, एट दिस प्लेटफॉर्म, is because somewhere we have missed it. We have missed the very basic step. We have forgot that education is not only about 2 + 2 or ABCD. Education is about life skills. Education is about how we actually manage our life. And that management of life comes with the basics. And because the contemporary society is the society of disasters, सो हम लोग उसको भूल नहीं सकते हैं. हम ये चीज़ भूल नहीं सकते हैं कि हमें उस डिज़ास्टर को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि वो डिज़ास्टर भी कहीं ना कहीं इसी एजुकेशन की देन है. अभी किसी एक बच्चे ने सवाल उठाया भी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिज़ास्टर बढ़ा है, क्लाइमेट पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उससे डिज़ास्टर बढ़ा है. नो डाउट बढ़ा है,
बट उसी एजुकेशन ने हमें ये बताया है कि देर इज़ वेरी वन कॉमन थिंग, very basic thing which we are today learning, sustainable development, जिसकी हम sociologist way back in the beginning of 20th century राधा कमल मुखर्जी ने holistic approach, social ecology, values की बात कर दी थी. और socialization का जो हमारी परवरिश है, हमारा जो समाजीकरण है, अगर वो इस प्रकार का हो कि ये चीज़ें हमें शुरू से ही बता दी जाए, तो मेरे ख्याल से आज इस फोरम की हमें इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही ना पड़ती. बहुत छोटा सा एक स्कूल का मैं एग्जांपल देती हूँ. अभी स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो कोई स्किट करके आए थे, और वो स्किट करके जब वो घर पे आए तो उनकी दादी बाहर धुलाई करवा रही थी. एक बच्चा गया, उसने नल बंद कर दिया, और उसकी मम्मा ने बोला जाओ जल्दी से शावर ले लो. उसने कहा मम्मा मैं शावर से नहीं नहाऊंगा, मेरी मैम ने बोला है कि बकेट से नहाऊंगा तो पानी कम वेस्ट होगा, तो मम्मा मैं आधी बकेट पानी से नहा लूँगा. तो दैट वाज लाइक मेरे लिए वो चीज़ एक बहुत छोटा सा वो एग्जाम्पल है, बट वो कितनी बढ़िया ट्रेनिंग है. और वो ट्रेनिंग मैं नहीं दे पाई, या कोई भी पेरेंट नहीं दे पाया, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि बच्चा आज अपना मैक्सिमम समय अपने माँ बाप के साथ नहीं, अपने स्कूल के साथ बिता रहा है. तो इसी वजह से स्कूल्स सबसे पहले सर आपकी ही बात को एक्सटेंड करूँगी कि यूनिवर्सिटी से पहले मुझे थोड़ा सा शायद नीचे जाना पड़ेगा. वी नीड टू अप्राइज द स्कूल्स ऑफ दिस वेरी सेंसिटिव इशू. और मेरे ख्याल से ये जो हम थ्योरी इतना ज़्यादा भर दिए हैं बच्चों के लिए, उससे बच्चों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो डेवलप कर ही रहा है, पेरेंट्स से दूर कर रहा है, समाज से दूर कर रहा है. इससे अच्छा है बच्चों को समाज के पास ले आए. हमें क्यों बताना पड़ रहा है बच्चे को कि क्रैकर्स मत बंद करो? वो बच्चे को हम इतना सेंसिटाइज क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि उसको पता रहे कि जब आप जहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल चले जाइए. हमें वो चीज़ें मेरे ख्याल से, और एग्ज़ाम इन चीज़ों का होना चाहिए. हमें ऐसी सिचुएशंस वहीं पे क्रिएट कर देनी चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चे कैसे उससे उभर रहे हैं. मेरे को बच्चे को रटा के, यकीन मानिए मैंने आज तक अपनी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं की है. ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ी ज़रूर, जिसकी वजह से मैं शायद मैथ से दूर हो गई, बट मेरी टीचर ने जो मुझे वैल्यूज़ सिखाई थी, जो स्किट्स के फॉर्म में कराई थी, जो उसके प्रैक्टिकल्स हुए थे, वो मुझे लाइफ में याद है, और उसी की वजह से आई एम देयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई थिंक द एकेडमिशियंस, द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेशली द स्कूल्स should come forward, and even the government should make it a compulsion to design certain curriculum that focuses on these issues. We can reduce the mugging up parts, we can reduce history, we can reduce several other things, but we need to introduce such new topics into our curriculum. We have to redesign and reschool our schools. Thank you so much. Very thoughtful. I think some question, I think it will be asked after the... At the end of the panel. Okay. Please, sir. Thank you. Good afternoon, everybody. I am Dr. Ram Pratap Yadav from Sri Ram Swarup Memorial University. That's my own view regarding disaster risk reduction program, and I will start my view from the topic health. So what is health? WHO says that health is a comprehensive physical, mental and social being of a person, and I suppose that disaster is just opposite to this social, mental and physical well-being. So what disaster does? Disaster does destroy our physical, mental and social well-being. So how it is possible to, we cannot stop the natural disaster, but we can stop the man-made disaster. So what are the methods and approaches we can acquire, we can take and we can apply in our life? One thing is that according to the 6-point agenda of the 10 points Prime Minister agenda, and we are gathered here regarding Sendai framework to achieving the goal of the Sendai framework. So it is all about to implement the curriculum, inject
in our curriculum to learn life lessons. And we have to rethink about our life lessons, as when Narendra Modi ji became Prime Minister of India in 2014, he injected nudge theory, nudge principle. And nudge principle was regarding the change in behavior, human behavior. And we see that after injecting the planning commission, the nudge theory, what did Government of India executed Swachh Bharat mission. And after that, we see that most of the people are very aware regarding the cleanliness, Swachhta Abhiyan ke baad. So, what we can do? We cannot deduct or reduce the disaster through injecting in curriculum. The point is that what in earlier session P.K. Rao sir said that the time is to talk about implementing those policies and collaborating the several policies. Just like that, in 2019 we saw COVID pandemic 19. Before that, there was a policy, there was an act was passed in 2018. Government of India passed an act that is related to Mental Health Act. And there was no provisions to implant it in our curriculum, in our training sessions. But after COVID pandemic, government saw that it's a severe need to implement this act. And after that, government of UP, we see that government of UP has applied this Mental Health Act 2018, and now in 33 degree colleges or something in 34 degree colleges of UP and universities, the Mental Health Act is implemented and students are benefited through these training sessions. So it means that what university can do, university can take decision regarding CSR, and they can adopt the villages, they can do sensitization of the community, and they can train their students not for these certificates and diploma only, but for the life skills. Just like that, we see in our Rig Veda, there is a Sanatan methodology is there. When we look our ancient texts, we see that there is Sanatan methodology already exists there. Hum badlenge, jug badlega. It means that we have to start through own self. How Sanatan methodology do? The Sanatan methodology is regarding Drishyam, Dhyanam and Myth. Drishyam means what? Whatever you read, whatever you learn, do in your practice. And please do benefit others. And what is Dhyanam? To self-retrospection of yourself. And what is myth? Myth is not just like mytho. It is my truth. Whatever experience I hold, we should share to the community, to the society. So, it is time to do the practical things, not only on the policy level, and there are several policy exist. Just I did example of Mental Health Act 2018. We should collaborate the departments, we should collaborate with several policies, and we should implement it in practice, not in theory only. Thank you. Thank you. That's it. आइए सर. Thank you, Dr. Bhanu sir. My friends on the dais, also my friends of the dais, dear students. First of all, I would like to thank for giving me an opportunity to share my viewpoint. I would just like to emphasize one thing, that we have deviated from our traditional ancient Vedic lifestyle.
and that is why we are facing so many problems. 3 शब्दों की बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा समय के अंदर। अभी स्वास्थ्य की बात कही गई थी। हम लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा WHO हमको बता रहा है। वी आर रॉन्ग। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ ही है जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। जैसे जो गृह में स्थित है वो गृहस्थ है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। यानी स्वस्थ कहते ही इम्प्लाइड है कि पहले मेंटल हेल्थ, फिजिक तो बाद में है, स्व में स्थित होइए। और स्व से हम डेविएट कर गए हैं। रीजन इज मार्केट कल्चर। वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द थिंग्स ऑन द अर्थ। एक दूसरा सूक्त है यो वही भूमा तत्सुखम, यानी जब हम समग्रता से जुड़ेंगे सुख शांति तभी अनुभव होगी। और उस समग्रता में जड़ चेतन सब शामिल है। लेकिन हम लोग तो भेद दृष्टि में पड़ गए हैं। कैसे अपनी अस्मिता अलग गढ़ें, कैसे अपने को अलग साबित करें, कैसे हम श्रेष्ठ हों, इस गति से जब हम चलेंगे तो हम डिजास्टर को ही आमंत्रित कर रहे हैं। हमें वेदों की ओर 2-3 कदम बढ़ाने होंगे और उसका एक प्रैक्टिकल ढंग है। वेदों में देवों की चर्चा नहीं करी गई है। और माफ करना, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। वैदिक लाइफ स्टाइल इज जस्ट एक जीवन पद्धति है, किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही है। उसमें जो 5 महाभूत हैं, द स्काई, द एयर, द फायर, द वाटर एंड द अर्थ, इन 5 महाभूतों को ही इनकी पूजा होती है और इन्हीं के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखने का प्रयास किया गया है। और इनके प्रति अगर हम ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें, तो अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है कि हमें अपने पृथ्वी का संरक्षण करना है। उसके लिए 3 बेसिक स्टेप्स हम लोगों ने निकाले हैं और उनकी शुरुआत अपने स्टूडेंट से हम लोगों ने कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, टच द ग्राउंड एंड से माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हे माता, आप मेरा भार ढोती हैं, इसलिए सबसे पहले आपको नमन है, आपको नमस्कार है। सेकेंड, व्हेन यू फर्स्ट टाइम सी द सन, बाउ डाउन एंड से ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। संस्कृत के सूक्त नहीं भी आते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो भाव मन में लाइए, क्योंकि वो सूरज ही है जो हमको जीवनदायिनी ऊर्जा देता है। और इस जो सूक्त बोला मैंने, इसका अर्थ है कि हे सूर्य देव, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो हमें दें, जो अकल्याणकारी है उसे दूर करें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं वहाँ पे। फिर तीसरी बार जो ही आपको कुछ खाद्यान्न खाने को आता है तो आप कहिए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे परम सत्ता, ये आप ही के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, सबसे पहले आपको ही समर्पित है। आप कहेंगे ये रिचुअल्स का की मीनिंग क्या है, रिचुअल क्यों सिखाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा करने से आपके जीवन शैली में पृथ्वी ग्रह के प्रकृति को बचाने की ओर उद्यत होंगे। अदरवाइज बाहर से सीखी हुई चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन बुकलेट तो बना सकती हैं, हम कहीं फोरम पे बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर सकती हैं, लेकिन हमारी जीवन पद्धति में नहीं आता। तो सबसे पहले हम बड़ों को वो जीवन शैली अपनानी होगी, रोल मॉडल बनना होगा, जिससे हमारे बच्चे उसका अनुकरण कर सकें। और जब वो हमारे जगत में है, इसलिए त्याग में भोग करें, लालच न किसी के धन में है। अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि हमें वैदिक पद्धति की ओर मुड़ना होगा कि झंझटों से मुक्त कर दे। लेकिन अब हम लोग शिक्षा पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन संग्रहित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर उस पद्धति की ओर हम लोग मुड़ेंगे तो वो चीज़ें जिनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज और वो बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जब तक वो जन जन से शुरू नहीं होता, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तब तक बाहर से वैदिक पद्धति से चला जाए तो मुझे लगता है सहजता से ही हम लोग क्लाइमेट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Meaning to all the culture we were having, India was having a very rich cultural background, and we always praise nature, we always try to save earth, save tree, respect water and everything. Now I invite Mr. Yogesh Kumar ji, who is the Program Operational Head of SCL Foundation. Please. Thank you. Thank you. My gratitudes to Dr. Bhanu, UPSDMA representatives, my co-panelists,
faculty from Lucknow University present here, and all the participants in this hall. I am Yogesh Kumar. I represent HCL Foundation. So HCL Foundation is basically an organization which takes care of CSR commitments of HCL technology. So as part of CSR commitments, we are implementing 5 key, and thus we are trying to contribute in nation building through different programs targeted towards urban and rural development, and of course to contribute to environment. So I will like to speak here from a practitioner point of view, that how different development initiatives, how we have tried to mainstream activities and interventions that contribute and support and help in saving environment, also working towards disaster risk reduction. So when we talk of disaster risk reduction, as my one of my co-panelists in a very simplified way, she explained that how a very simple daily routines can help us in reducing risk, in of course disaster risk reduction. So this is how it goes. So when I talk about HCL Foundation program, we work on holistic rural development, we work on holistic village developments, and we try to integrate that how disaster risk reduction strategies can be integrated in our ongoing programs, and how these can help in ensuring disaster risk reduction strategies. So I will take a very simple examples, like when we go for planning with Gram Panchayats, when we go for Gram Panchayat development plans, we ensure that we talk about the issues, we talk about the concerns that will add to what we call disaster management plans. So many times what we segregate a lot of things, we do Gram Panchayat planning separately, then we come after a few months, we come back and we we make a disaster management plan for that Gram Panchayat, then we try to find out the ways to integrate both, and ultimately many times it happens, many times it does not happen. So what I want to say and what I want to focus is that whenever we initiate any kind of development initiative, we should think that how it will affect environment, to anything that is related to disaster risk or disaster mitigation, and we should move ahead accordingly. One simple example, when we worked around water supply scheme in Hardoi district of Uttar Pradesh. So what we ensured is that along with household connection, along with network of piped water supply, we also ensured that water hydrants are installed at key points of that Gram Panchayats along those streets, and we ensured this. So this is a very simple example, like how we build around, we plan around, and we miss simple steps which can contribute to the disaster risk reduction in a great way. Now, this session is particularly focusing on that how disaster risk mitigation should be integrated in our course curriculums for students. Today in morning itself, I was in SCRT, Uttar Pradesh. So SCRT is presently working on on designing a curriculum. Basically, they are working on one training module for teachers, which should focus that how they can teach students about disaster risk mitigation.
I think this is the right time to initiate a dialogue with them and see that all those aspects are there which we want that our children should know, and their teachers should be well equipped to pass those messages on, what we are deliberating here upon. So that is one aspect. Other aspect is, it is a very good idea, and many countries and many states, in fact, in India, they have done it, and that is analyzing our own existing course curriculum and seeing that how various subjects and various chapters in those subjects, how well disaster risk mitigation and related aspects are integrated in them. Like, there may be a chapter on life skills, so there is lot, like disaster risk reduction has a lot to do with daily life skills. So how this should be dealt is one of the important way in which we can deal with this situation. So these are my some of the very simple suggestions, and along with that, of course, as I said, that it is a way of life. It is, and my co-panelists have again and again emphasized on that disaster risk reduction is a way of life, and it is integrated in most of the things that we do in daily routines. So I think those aspects should be pondered upon, discussed, deliberated, and our own people, children, they should be trained around it. And when we talk about course curriculum, learnings, it is not only about school children, it is also about people who have not got opportunity to go to a school, who are in the rural pockets, or the urban poor who have who don't have the facility to go to a school, or children who are out of a school. Of course, they should be brought to a school, and along with that, those most deprived people who are most vulnerable to such disasters which we are talking about, they should also be catered upon, and we should see that how they can be, how we can ensure the things for them. Sixth World Congress that is going to happen in Dehradun, fellow speakers here, thank you so much for the opportunity. No, ma'am. You can go ahead. Actually, SCL Foundation, I remember that you were having a stall in one of the program when Honorable Minister for Climate Change, Mr. Ashwani Chaubey, also came. And the model of the development of Gram Panchayat or village was so impressive that he told that you just send somebody, and I want to analyze those things. You are doing a nice work. Our MP fund is unable to do such type of activity, and your program is very much helpful in our villages. That's great. And the founder, Sivnada, sir, is also so generous that he's one of the biggest donor for social cause. Very nice. Thank you. Ma'am. Thank you, sir. I'm Dr. Kavita Gautam. From Professor Rajendra Singh Rajubhaiya University, Prayagraj, formerly known as Allahabad State University. Here I'm going to discuss about the role of various stakeholders in disaster management. यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बात करें जिनकी भूमिका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि वो स्टेक होल्डर्स कौन से स्टेक होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स एज ए स्टूडेंट्स आप भी हैं, एज ए बीइंग टीचर, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स हम भी हैं. एक फैमिली भी स्टेक होल्डर हो सकती है. यहाँ पर हम कुछ मेन स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, जैसे कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, NGOs, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर्स and educational institutions and international agencies also.
अभी रिसेंट में हमने नेपाल में आए भूकंप को फील किया, कहीं ना कहीं लखनऊ में थोड़ी तीव्रता ज़्यादा थी, इलाहाबाद में थोड़ा सा उतना नहीं फील हुआ, ज़्यादा सेकेंड्स का नहीं था। बट मैं यहाँ पर ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग किसी भी डिज़ास्टर को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर फील नहीं किया होता है। हम यहाँ पर उस चीज़ को का सामना नहीं करते हैं। हम सोचते हैं भूकंप आना, बाढ़ आना या इस तरह की ही डिज़ास्टर्स मेन डिज़ास्टर्स होते हैं, अदर डिज़ास्टर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। तो हम कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटीज़ आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन एनी डिज़ास्टर, इन एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, and here it is very important to community based disaster risk reduction should be the core of any kind of disaster risk reduction approach. कम्युनिटी में हम तीन तरह से बात करते हैं कि जब डिज़ास्टर आता है उसके पहले कम्युनिटी का रोल क्या होता है, डिज़ास्टर के टाइम पर कम्युनिटी का रोल क्या होता है और डिज़ास्टर के बाद कम्युनिटी का क्या रोल होता है। कम्युनिटी में अगर आप जाएं इस टाइम पे, अगर हम इलाहाबाद में जाएं कम्युनिटी में कहें डिज़ास्टर के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो किसी भी तरह का डिज़ास्टर नहीं आता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएँ, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की, और जो मैन मेड आपदाएँ होती हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं जो हमने 2019 से लेकर अभी 21 तक फेस किया है। स्वास्थ्य आपदा को जो हमने फेस किया है वो सभी के लिए था और अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कोई आपदा आ जाएगी। तो आपदा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो उसके बचाव के लिए हर कम्युनिटी को अवेयर होना, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, वही हमारा वनरेबल सेक्शन है जो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो कम्युनिटी का रोल है बिफोर डिज़ास्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन में होता है। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वनरेबल एरियाज, इसमें जो हम भूमिका की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वनरेबल पॉपुलेशन, अवेयरनेस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मेकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, लोकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज, अवेयरनेस जनरेशंस, कम्युनिटी बेस्ड वार्निंग सिस्टम। ये हमारा प्लान होता है कि बिफोर डिज़ास्टर हम प्रिपेयर्ड कैसे करें कम्युनिटी को, या कम्युनिटी की भूमिका किस तरह से हो सकती है बिफोर डिज़ास्टर। ड्यूरिंग डिज़ास्टर कम्युनिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी तरह का अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो कम्युनिटी उसमें बहुत ड्यूरिंग डिज़ास्टर अपनी, चाहे हम कोविड की बात करें या किसी भी तरह की आपदा की बात करें, फ्लड की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, इसमें जो होता है भूमिका सर्च and rescue, evacuation, medical first response, building and locating place for temporary shelters, need analysis to be affected communities, relief management and distribution, identification of vulnerable groups, coordination with the authorities, NGOs, and also अगर हम community को अवेयर करते हैं या ट्रेन करते हैं तो जो हमारा रिस्क की डिज़ास्टर से होने वाली जो हानि है और उस पर होने वाला जो हमारा कॉस्ट होता है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिज़ास्टर जो रोल है वो है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी फेज़ का, जिसमें हम लोकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी डेवलप करते हैं जिससे होने वाली हानि को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लोकल पीपल्स को वो कैसे अवेयर करें और वहाँ का अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह से डेवलप करें। देन हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, नेशनल गवर्नमेंट की। तो नेशनल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारा प्लान्स बनाई हुई हैं, जो अभी हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स के बारे में सुबह से डिस्कशन हो रहा है, तो इसकी अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनजीओज़ की। एनजीओज़ हमारे जो कार्य करते हैं, लोकल जो ग्राउंड लेवल पर एनजीओज़ जो काम करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को हर एक प्रोग्राम किसी भी सेक्टर से वो जुड़े हों तो उसमें लोगों को अवेयर करना, प्रिपेयर करना, ट्रेनिंग देना, ये एनजीओ सेक्टर्स का काम होता है। तो हमें उनके साथ भी मिलकर काम करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्हें उस चीज़ के बारे में पता हो, ताकि जब वो लोकल पीपल्स से बात करें या उसके ऊपर वो ट्रेनिंग कम्युनिटी में जाकर प्रोवाइड करें तो वो राइट डायरेक्शन में वो चीज़ें हमें हो, जिससे हम रिस्क के जो होने वाले हानियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं।
and course curriculum, because I all you are talking yes. is very good, Yes. very nice, very informative for students. But we have to उसी पे ही आ रही हूँ please. सर उसमें टॉपिक दिया हुआ था इसलिए मैंने ये नहीं, टॉपिक ठीक है लिया ना। ओके तो ओके थोड़ा सा आप कोर्स करिकुलम क्या चेंज करेंगे, हाउ यूनिवर्सिटी कैन रेसिप्रोकेट, दैट इज द ये मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एज ए स्टेक होल्डर लिया Okay, है please. कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण Yeah. होता है। मैंने स्टेक होल्डर्स ही इसलिए लिया कि मैं थोड़े थोड़े स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी बात करूं, क्योंकि वो टॉपिक था उसमें, इस वजह से मैंने लिया था। सॉरी फॉर दैट सर। इट्स ऑलराइट. Like you yes. can tell that NSS, NCC Yes, already yes, existing. They are NSS, having course. NCC and Yeah. Rangers Rovers Yeah. team is also existed in university, Rangers Rovers, and I'm the coordinator of Rangers in my university. अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टेक होल्डर, तो उसमें हम जैसे सुबह से डिस्कशन हो रहा है कि हम एक करिकुलम को इस तरह से डेवलप करें जो कम्युनिटी में जाकर बेनिफिट दे और कम्युनिटी के लोगों को सेंसिटाइज करे, अवेयर करे और उसके डिजास्टर को के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। कोर्स करिकुलम में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल सेशंस भी रखने चाहिए, जिससे एक्चुअल में किस तरह से हम कम्युनिटी में जाकर काम करेंगे। जैसे सर ने अभी, रजनीश सर ने डिस्कस किया कि उन्होंने प्रैक्टिकल भी रखा है एंड डिजर्टेशन भी रखा हुआ है। तो प्रैक्टिकल हमारे एटलीस्ट जैसे हम लोग सोशल वर्क में कराते हैं 3 डेज़ का प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं, उसी तरह से वीक में एटलीस्ट 2 डेज़ का प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए। और हम सिर्फ थियरीज़ को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि डिजास्टर आने के क्या कॉज हैं और क्या प्रॉस एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये थियरीज़ के माध्यम से हमें पता होता है कि नेचुरल डिजास्टर्स के क्या कारण हैं। और जी, a lot of good thing you have delivered. I will just ask yes. our next Thank you, sir. panelist to go ahead. Thank you. Thank a lot. Namaskar to all my dignitaries present here. Dear students, I would like to start my talk with a story, a very little story. एक महिला थी, अपने एक बीमार बच्चे के पास गौतम बुद्ध जी के पास गई और उसने कहा, महाराज मेरा ये बच्चा, मेरे इस बच्चे को बोला गया है ये बीमार है और इसको ये चीज़ें खाने के लिए मना की गई हैं, बट मैं सब कुछ करके हार चुकी, ये नहीं मानता है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं आपको रेमेडी दूंगा, आप मेरे पास 15 दिन के बाद आइएगा। तो वो बोली ठीक है। थोड़ा आश्चर्यजनक स्थिति भी पैदा हुई इसके मन में कि इतने विद्वान महाराज हैं और इनको 15 दिन चाहिए रेमेडी बताने के लिए। उसके बाद वो चली गई, 15 दिन बाद आई। बुद्ध जी से उन्होंने रेमेडी पूछने के बजाय ये पूछा कि आपने 15 दिन का समय क्यों लिया। तो महात्मा बुद्ध जी ने ये कहा कि जो चीज़ें तुम अपने बच्चे को खाने के लिए मना कर रही थी, मैं भी वही बात समझाता उसको किसी दूसरे तरीके से, पर उससे पहले मैंने ये सोचा कि पहले मैं तो खाना छोड़ूं। ही सेड कि पहले मैं तो खाना छोड़ूं, तभी तो मैं अगले को सजेस्ट कर पाऊंगा। बीइंग अ टीचर ऑफ सोशल वर्क, हम सोशल वर्क में बात करते हैं कि चेंज अवर सेल्फ, फर्स्ट वी शुड चेंज अवर सेल्फ, देन वी ट्राई टू चेंज अदर्स। इफ़ यू विल चेंज, द वर्ल्ड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू यू। So here I would like to talk about the practices. What kind of practices are required? And as being a teacher of social worker, what kind of things we can inculcate among the minds of the children? That is important. Through the NSS, community organization, there is I think the primary method, community organization. We try to make the community empowered. We choose the pupil from the community and we develop the leadership quality among them, है ना, to sort out their problems. In this way we train them and they train others. In this way we make the community empowered. I think this is the power of social work. We have the solution of every problem. So these kind of method, what I would like to suggest here, कि जितने भी courses हैं, whatever the courses we have, either they have the field work there or not, they have only theories there. What they should do, they should inculcate, they should add the community organization with the disaster management syllabus.
1 unit we can do that, whatever, it depends upon the curriculum makers. It should be added in every course, what I think. Because who are not enrolled in the disaster management courses, they can also be upgraded through that knowledge. Secondly, what kind of socialization we are providing our children. We always used to say, देखो बगल वाले का जो बच्चा है ना, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो ये बन गया, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम क्या करोगे? Why we are doing so? हम दूसरों के हिसाब से ऐसा काम क्यों करते हैं? हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते? अपने आप हमको जो पसंद है हम वो क्यों नहीं करते? हम अपने अंदर वो पावर डेवलप क्यों नहीं करते कि हम वो कुछ डिफरेंट हटके कर सकें जो कि रिक्वायर्ड है समाज को? Why most of the researches has shown that most of the people value money and status. Sir is coming there. Madam is coming there. A person who is every day working to save the environment, to save the planet, in social media, very little, in the corner, we will get the name of that fellow. And most of the people who are working on those issues, they will not be on the social media. Why? This is the issue which should be, whatever you are doing, that is related to upgrade your spiritual dimension. We talk about the health, we talk about the Vedas, and we have forgotten the spiritual dimension of health. If we will focus on that dimension, do whatever you like. Do that for others. Do that for others. It will enhance your overall health. It will enhance the health of our planet. This is very important. This kind of practices, this kind of nurturing, we have to establish among the mind of our children, either students or our children. This is very much required, what I like. Research is interdisciplinary researches. We talk about the stability. In whole the world, political instability, जब political instability चारों तरफ है, हम कैसे बात कर सकते हैं एक इतने महत्वपूर्ण इशू की? Political instability के साथ हम बात नहीं कर सकते environment की, हम सिर्फ बात ही करते रह जा रहे हैं, जो मुझे feel होता है. जब चारों तरफ पॉलिटिकल, तो क्या जो बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, हमको उनके माइंड में इस जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट भी होगा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट साइंस भी होगा, इस प्रकार की नर्चरिंग उनकी होनी चाहिए कि कैसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को किस तरीके से एक सूटेबल इकोनॉमी बना सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन. कैसे किस तरीके की रिसर्चेस हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का डेवलपमेंट, कुछ ऐसे गजेट्स वगैरह डेवलप हो सकें. तो वी नीड द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस, दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क. वी कैन इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स, we can involve the students of NSS, we can involve the students of NSC, NCC. First of all, we will try to change their mind. Okay, we have lots of things to do, not for ourselves, but it is very tough. उसके लिए पहले हमें खुद चेंज होना पड़ेगा. रहे होते हैं पर AC ऑन होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं पिक्चर हॉल्स में जाती हूँ, कितना बर्डन हम डाल रहे हैं उस वॉल्यूम. Talking about everyday our responsibility towards the climate change. Very good. What I feel now it's the time to come for giving chance to the other group, because 2:30 was the next time. I'm saying SDRF Commandant sir also has come, and they are doing a lot of good work. So I just want to summarize the thing, or I can just a very brief summary. It was a very fruitful discussion. There were two panel discussions clubbed in one, and it was very interesting. Like few were having a different role and task, few were having a different role and task, and both were delivering the right thing in right time. And sometime it was just we were thinking that it is just crossing the other topic also, other discussion topic. It shows that all are versatile or having a lot of knowledge and lot of commitment towards the students and our faculty. I'm very much thankful.
It has come with Bhanuji's introduction with the topic. I think first topic was introduced by Dr. Bhanuji. Second topic was, I think, was not introduced, but it was now clear that we are having two things. One was the 6 point of PM agenda we were discussing, that how university can respond to that. Research, I think you have rightly pointed out that interdisciplinary research, and I think it is the need of the hour in our country. What you are doing, it should be a part of research. Like the Honorable Minister was telling, that your work should be reflected in a very nice manner. If universities should take up such type of research with the help of you, you should finance few research also. So it's a very fruitful discussion. And now I want to thank all our panelists for giving a very valuable suggestion and informing all the participants about the university role and to, as university, as academician, to improve our climate and again do justification for climate change and adoption and again disaster risk reduction. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Deepak Saab. Thank you very much, and all panelists. Before I close this session, I'll request Satish Saab, Commandant SDRF, to come here on dais and come on dais to felicitate some of the guests. Please, Satish ji. Dr. Shilpa, Dr. Kavita, and Dr. Nidhi. Please come on the stage. Dr. Shilpa, Dr. Kavita, Dr. Nidhi. Sir, now, sir, we will break for lunch for 15 minutes, and we will have that session soon after lunch. Thank you. Thank you. Commandant SDRF, currently heading the disaster.
हेलो 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 यस, आप लोग अपना सीट ग्रहण करें. प्लीज टेक योर